ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. So generally, when we hear about habits, the first thing comes in our mind is habits are not very good. हम कहते हैं कि इस चीज की आदत पड़ गई है, क्या करें यार, छूटती नहीं है. ये सिगरेट हमसे छूटती नहीं है. And lot of other things. Some people get very strange habits. हम देखते थे कुछ सेशन मुंगेरी लाल के हसीन सपने, आप लोगों में से कुछ ने देखा हो तो he was used to have blink his eyes like this. So some people blink the eyes and some people do these kind of things. A lot of things people do and they try to leave it, but somehow it is not possible. Looks like almost impossible, but the session says the power of habit. Looks very strange. What is the power of habit? So we'll discuss today, habits are not always bad. It is about good habits and bad habits. So we'll discuss more about it in the session today. Okay, so we'll begin. And as happened in the last week, week, we will reserve the last 5 minutes maybe for question and answer session. So what is habit? So any action which we repeatedly do, right? Or it's not only action, it is your thoughts as well. So habit is not only action. So the way we look at the things is also our habit. Sometimes we always, we know that people are pessimistic, people are optimistic. So they have a habit of looking at the negative side of something, and that can be useful sometimes. And then some people always look at the positive side of it. We always say that mind your thoughts as your thoughts become your action, right? And mind your action as your action becomes your habit. So it's not only the action which we repeatedly do, it is the way of thinking also. And I think way of thinking is more important than the action, because action follows the thinking. So therefore, habit is made of, I would say, the thought process, how you look at the things. Do you look at the glass as half full or half empty? So all those things. So habits, I would say, it's about thoughts. And Krishna in Bhagavad Gita says, "Dhyayate vishyana punsa sangaste shubhjayate." Krishna also said that it begins with your thought process. So all we have to do is monitor our habits in terms of our thoughts, and then automatically it will lead to the correct actions as well. Okay. So habits are thoughts in our subconscious mind, which we tend to do. Subconscious mind means what does it mean? That we don't consciously try to think in a particular way, but it happens. It happens. कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक के पीता है, right? So that image, that perception we have built, maybe due to what happened in my childhood, how I was brought up, what all the experiences I had in my life since beginning, since my childhood, past life, if you believe in past life. So all those things actually lead to a particular way of thinking. So it's in our subconscious. Whether or not we plan for it, it happens. So subconscious mind, we know a lot about what is right and what is wrong, but still we end up doing things which we are habitual of doing. In Bhagavad Gita, again, Arjuna asks the same question from Krishna. He says that Krishna, I know what you are, Krishna, I know what you are saying, but the problem is, it looks like somebody is forcing me to do. I don't want to do it, but it looks like somebody is forcing me to do the thing which I don't want to do. So what is that don't want to do? In the last session, we heard about intelligence as well. So sometimes intelligence says, okay, this is not good. We should not be doing it. But we are habitual of doing that and we tend to do that. For example, we know that the example is that death is certain. You know, one of the questions which was asked to Yudhishthir Maharaj, you must have heard a story of Yaksh in Mahabharata, kind of a ghost, powerful ghost. When the Pandavas were in exile in the forest and they went to a pond to drink the water, and one by one, all the Pandavas got killed because they were supposed to answer the questions asked by Yaksha. So they didn't, and the result was they died. And then Yudhishthira Maharaj came and the Yaksha asked all the questions. And one of the questions he asked is, what is the greatest surprise in the world? What is the greatest wonder? We would have thought about the 7 wonders of the world.
So not those seven wonders. He said that the greatest wonder in the world is that everybody is seeing that people are dying. Hmm? Our near ones and dear ones are dying. Hmm? But still we live as if we will live forever. So that's the thinking habit. Hmm? And Bhagavad Gita says we are not this body, but we are so habitual of living in this body that we end up thinking as we are body. For example, a person who drives a Mercedes car, slowly and slowly think that I am Mercedes and this person is just a Maruti Alto. So I am superior to that person. So that's a habit. By repeatedly moving into a big car, a Jaguar maybe, we think like we have been upgraded because we associate with that. So these are the habits that make our subconscious mind, and it becomes very difficult because something in the subconscious mind we are not purposefully, we are not doing it. I mean, it is happening. So something which is in the subconscious mind, it needs a lot of practice to remove it, to change it, to modify it. Okay. Okay. So I will tell you a thought on the same basis. There was a thief. एक चोर था जो कि कहीं पर सत्संग सुनता सुनता धीरे धीरे एक अच्छा आदमी बनने का प्रयास। So what happened? They went to a pilgrimage. एक यात्रा में जा रहे थे, तीर्थ यात्रा में, और वहां पर वो चोर सारे एक हॉल में लोग सोए थे, सब लोगों के सामान वहीं पे पड़ा था, and he was sleeping among everybody. So slowly in the morning, everybody went to take bath. In such traveling, people generally don't lock their baggages because they see that everybody is spiritual and the tour is spiritual. It's a hall. Nobody is locking the things, and he suddenly saw he is alone in the room, and there is a lot of lot of bags all around, and nobody is watching. No locks. He can steal a lot of things, but he was thinking, no, 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 no. I am in a pilgrimage. Why should I be doing this? I already left this business. So, but he was so much habitual of stealing the things that he ended up in just moving bags from here to there. तो उसने क्या किया, उस वाले का बैग उठा के यहाँ रख दिया, इस वाले का बैग उठा के यहाँ रख दिया, तो उसके अंदर जो इतनी जल्दी वेग, उसको वेग कहते हैं हम, हाँ, जो उसके अंदर क्रेविंग हो रही थी ये करना ही है, तो उसमें ही एंडेड अप सबके बैग इधर उधर रख दिए. कंफ्यूज्ड पीपल केम एंड दे वर फाइंडिंग द बैग्स, और परेशान हो गए, मेरा बैग नहीं है, मेरा बैग कहाँ चला गया, हाँ. एंड ही कन्फेस्ड, ही सेड लुक, आई एम अ थीफ, आई वाज अ थीफ, but I mean very difficult for me to control this, so मैंने इतना कर दिया, कृपया मुझे क्षमा कीजिए. So this is what the result of habit is. Even after listening to a lot of um, um, motivational lectures or directional lectures, we still end up doing the same thing. Okay, so as we discussed, are hobby habits always bad? So I would say no. But when people become habitual, they ignore the reality. हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि भेड़ चाल. आप लोगों ने अगर भेड़ चाल सुना हो, इट्स कहावत है हिंदी में कि एक भेड़ अगर नीचे गिर जाती है खाई में, तो पीछे से सारी लाइन से एक एक करके गिरती चली जाएंगी, एंड वो इतना इंटेलिजेंट नहीं लगाएंगे कि क्या आगे वाली के साथ क्या हुआ. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस. हैबिट कवर्स आवर लॉजिक, इंटेलिजेंस, नॉलेज कंप्लीटली, बिकॉज वी आर कंडीशनड. इसको हम कहते हैं कंडीशनड or habitual of doing particular thing or thinking in a particular way. But we are driven by our habits and not by our knowledge. So what we can do? Therefore, to do the right thing, we must harness power of habit. That's the session for today. It is not that habits are bad. We have to harness. We have to cultivate, inculcate the good habits. So first of all, we have to know what are the good habits, and then we can do anything about it. Okay. So I think most of us knows about the bad habits we have, but no, none of us mostly knows what are the good habits I can actually develop to become a happier person. So we'll try to see how we can do this. So power of habit, how we will be able to actually do it. आपने कभी सुना है कि जैसे मैं बचपन में कई वो कुंग फू कराटे क्लासेस में हम लोग गए कुछ टाइम तक, तो हमें कुछ ट्रिक्स सिखाई जाती थी कि हाउ टू किक और हाउ टू एक्चुअली उसको कैसे खींचना है, कैसे पटकना है, एंड ऑल दोस थिंग्स. लेकिन जैसे ही हम लोग स्कूल में जाते थे और सडनली कोई हमारे बीच में लड़ाई हो जाती थी बच्चों की, तो वी विल फॉरगेट एवरीथिंग, और एकदम से किसी के कॉलर पकड़े और तेरी तो इन फ्री स्टाइल, इंडियन फ्री स्टाइल हम चालू जाते थे, फॉरगेटिंग एवरीथिंग वी लर्नड अबाउट फाइटिंग.
So that's यही सारी समस्या है. Even after knowing everything, we don't use it. So we will see how to harness this. So first of all, identify the good habits and then try to cultivate it. Okay. So we will see what are the three. So we'll not discuss about a lot of habits. बहुत सारी हैबिट्स हो सकती हैं, बट ये 3 अगर की हैबिट्स अगर आप कर लें, जो कि आफ्टर स्टडीइंग लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, ये ऐसा निकलता है कि ये 3 हैबिट्स अगर आप अपनी लाइफ में डाल लें, इसको हैबिचुअल कर लें, तो यू विल बी सक्सेसफुल. ओके ओके, व्हाट आर दोज? टाइम मैनेजमेंट, शार्पन द सॉ, वर्किंग टुगेदर. इनकी टर्म से कुछ कुछ समझ में आता है, लेकिन इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what lies there. Sharpen the saw. Sharpen the saw, as the word itself says. एक अगर कोई क्या कहते हैं उसको, वुड कटर, जंगल में जो लकड़ियां काटते हैं, लकड़ियां काटनी है तो उसको अपना सॉ जो होता है, दैट कुल्हाड़ी, उस कुल्हाड़ी को उसको एक्स या आरा, उसको तेज करना पड़ेगा, उसमें धार लगानी पड़ेगी, बिकॉज उसी से वो लकड़ी काट सकता है. नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज अ स्वॉर्ड. ज्ञान की तलवार, अगर आपने सुना हो, ज्ञान की तलवार, अगर ज्ञान की तलवार को हम तेज नहीं करेंगे तो हम ये डाउट्स को, ये हैबिट्स को नहीं काट पाएंगे. तो शार्पन द सॉ मीन्स डेवलपिंग द नॉलेज, गेनिंग द नॉलेज, सीकिंग द नॉलेज. सो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं इसको. हाउ टू टेक द नॉलेज, व्हाट इज द करेक्ट नॉलेज, कहां से मिलेगी नॉलेज. दिस वर्ल्ड हैज बिकम फुल ऑफ information on the tip of your finger, in your mobile, in the YouTube, in the Google, all those things, laptops, desktops, wherever you go, you need Wi-Fi. So information, a lot of information is coming, but you have to see which information will actually cultivate the good habits. So what is the correct information, what is the correct knowledge, I would say, not the information. Okay, so we'll see how information can be sought. There are different ways in which you gain the knowledge, and these are the ways. So okay, so here, before going into that, we are talking about two important things. A person who is intelligent must be able to discriminate between right and wrong, and he must be determined once he understands. So for determined, we are talking about habits. So I mean, you kitna bhi aap determined ho jaye, but जैसा मैंने पहले बोला, जैसे अर्जुना is asking, it is not possible. ऐसा लगता है कि कोई मुझसे जबरदस्ती करा रहा है. So but the first thing is discriminate. तो discriminate part is we are now studying right and wrong में कैसे हम differentiate कर सकें. Okay, so okay, another term, practice makes a man perfect. So I would say this is totally wrong. Before practicing, you must know what to practice. Before maybe you are screwing, you are doing a you have a screwdriver, and you are trying to do that, but unless you know how to do it, you may develop a wrong practice. If you don't know how to press the keyboard, you may develop a wrong habit of typing, which will not be able to live in the entire, in this life at least. If you have it of this like this, you are typing. So you may be very fast in doing that, but that is not the correct way of doing. So you have to cultivate the correct habits. So that's what we are trying to see. So there are 3 ways of gaining the knowledge. One is pratyaksha praman, direct sense perception. Second is shabd praman, which is hearing from a bona fide authority. The third is anuman praman, like a speculation. Okay, so we'll try to understand this with the help of some examples. Generally, by looking at these, it looks like pratyaksh praman or direct sense perception is the best way of gaining the knowledge. So, I mean, to give the context, we are trying to cultivate the knowledge, first of all, gaining the knowledge so that we know what to do, what not to do, and then practicing that. So practice the good habits. So before that, we are trying to understand where to get the knowledge from. Okay, so प्रत्यक्ष प्रमाण जनरली बोला जाता है, seeing is believing. जो हम देख रहे हैं उसी पे विश्वास करो भैया, बाकी चीजों पे मत करो. But we know that seeing is not believing, totally not. So there are these people, you can see this image of an elephant, and these are six blind men. इन लोगों ने कभी हाथी नहीं देखा था अपने जीवन में. इनको बोला गया कि हाथी को टच करके बताइए कि हाथी कैसा है. हाँ, तो जिसने उसकी ट्रंक को हाथ लगाया वो कहता है कि इट्स लाइक अ स्नेक. जिसने उसके पैरों को हाथ लगाया उसने बोला अरे इट्स लाइक अ ट्री और अ पिलर.
जिसने उसके कानों को टच किया, अरे ये तो फैन की तरह है। सो एवरीबडी गेव डिफरेंट व्यूज। हाँ, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। आप कहेंगे नहीं देख थोड़ी रहे थे, नहीं देख तो नहीं रहे थे लेकिन टच कर रहे थे। ओके, देख के कर लेते हैं। सो लॉट ऑफ टाइम्स अगर आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं या गर्मियों में आप सड़क में देखते हैं तो आप मिराज को देखते हैं। दूर से आपको लगता है कि पानी पड़ा है, लगता है बस वहां पहुंच जाए, किस तरह से ठंडक होगी। जैसे ही वहां जाते हैं पानी उतना ही दूर चला जाता है, जैसे आगे जाते हैं पानी और दूर चला जाता है। सो दैट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। हमें हवाई जहाज उड़ता हुआ दिखता है और थोड़ी देर बाद वो हवाई जहाज गायब हो जाता है। गायब नहीं हो जाता एक्चुअली में, वो हमारी रेंज के बाहर चला जाता है। वी डोंट सी अल्ट्रा वायलेट rays, we don't see x-rays, and a lot of rays we are not able to see. Lot of voice and frequency, unless we match the frequency, we are not able to hear, because our ears can hear at a particular frequency only. So our senses actually are very good in gaining the knowledge, but they are prone to mistakes. Our senses are not perfect, our senses are imperfect. जैसे हम आंवले के बाद पानी पीते हैं तो हमें मीठा लगता है, या मे बी संतरे के बाद पीते हैं तो कड़वा लगता है, या कई बार हमें कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो हमें मूविंग दिखती हैं, ऐसे मूव कर रही हैं, बट दे आर नॉट मूविंग। सो लॉट ऑफ ऑप्टिकल एंड इल्यूजन्स, नॉट ओनली ऑप्टिकल, सुनने में भी कई बार हमें दूर की आवाज, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं विच मे बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल दीज थ्री things. So suppose a person heard a lot of noise, people were fighting, a neighbor was fighting. तो पति पत्नी की जोर जोर से लड़ाई आ रही थी, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और धूम धाम तड़ाक तुड़ुक हो रही थी। तो ये बेचारा घबरा गया, इसने बोला भैया लड़ाई हो गई। हाँ, पक्का लड़ाई हो गई है, चलो चल के देखते हैं। ये गए और वहां पर इन्होंने देखा कि हाँ कुछ कुछ तो हो रहा है, काफी कुछ, हाँ लोग एकदम से मूवमेंट्स हो रही है, बहुत रोष है आपस में। तो इन्होंने कहा हाँ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण ने भी क्या प्रूव किया कि लड़ाई हो रही है। अनुमान प्रमाण, स्पेकुलेशन, आपने आवाज सुनी दूर से, पता नहीं चला क्या हो रहा है, तो यू स्पेकुलेटेड कि ऐसा हो रहा होगा। फिर आपने जाके भी देखा, और जब आपने जाके देखा तो वाकई में वो दोनों लड़ रहे थे। तो फिर आपसे रहा नहीं गया, आप गए, भाई साहब क्यों लड़ रहे हो, हाँ अच्छी बात नहीं है, देखिए चारों तरफ हल्ला हो रहा है, क्या सोचेंगे मोहल्ले वाले, चारों तरफ बदनामी हो रही है, सब लोग अपनी बालकनी में खड़े हो गए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं व्हाट, वी आर ट्राइंग टू रिहर्स फॉर अ प्ले, हम एक प्ले की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बीच में आ गए, वहां पे शूटिंग हो रही है, देखिए सामने कैमरा वाला आदमी खड़ा है, आपने सब शूटिंग बेकार कर दी, गो अवे फ्रॉम हियर। तो देखिए, दिस एग्जांपल एक्सप्लेन्स, प्रत्यक्ष प्रमाण गलत साबित हुआ, देखा, देख के गलत साबित हुआ, सुना, अनुमान प्रमाण लगाया, गलत हुआ, स्पेकुलेट किया। लेकिन जब हमें शब्द प्रमाण उसी व्यक्ति से सुना, हाँ हियरिंग फ्रॉम द हॉर्स माउथ जैसे हम कहते हैं, जब हमने सुना तो हमें पता चला नहीं वो तो लड़ ही नहीं रहे थे। जनरली वी से एन एग्जांपल कि आपके पिता कौन है या मेरे पिता कौन है, वी डोंट डू अ डीएनए सर्च, डीएनए टेस्ट तो नहीं कराते हम लोग वी हियर from a bona fide authority. We call it a bona fide authority. Bona fide, a genuine person who can tell about that. Hearing does not mean कहीं से भी सुन लिया जाए। मेट्रो में बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, हाँ बार्बर शॉप में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, सिगरेट के सुट्टा ब्रेक की जगह पर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बट वी आर नॉट सेइंग कि कोई भी किसी भी मैटर को जानने के लिए किसी से भी सुन लिया जाए। Hearing from a bona fide authority, one who is eligible in that field, is an expert, knowledgeable, and has been prescribed, has been authorized in that area. जैसे हम डॉक्टर की राय लेते हैं, हियरिंग फ्रॉम शब्द प्रमाण, हमें लग सकता है कि इसको डॉक्टर साहब इसको बहुत सारा कोल्ड हो रहा है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। हाँ, डॉक्टर में से ना 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 ये सिम्टम तो कोरोना के नहीं है, आप जाइए, है ना। So hearing, so we may see like it is happening, the fever is happening and all those things happening, we may speculate, but if we go to the authorized person like a doctor, he can tell us whether that disease exists or not. He may do some tests and all those things, and based on that it may prescribe. So शब्द प्रमाण ये बहुत ही important है आपकी पूरी लाइफ के लिए। I'm telling you today, we tend to take knowledge from different areas, lot of areas, and we never focus on the शब्द प्रमाण, hearing from a bona fide authority. अगर आप bona fide authority से, अगर आप कहीं से knowledge लेते भी हैं, माना कहीं से आप स्विमिंग करते हैं तो एक स्विमर ट्रेनर लेते हैं, म्यूजिक भी किसी ट्रेंड व्यक्ति से लेते हैं, इस तरह से हम हर जगह तो जाते हैं, लेकिन जब इट्स अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, नोइंग अबाउट व्हाट इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, वी टेंड टू हियर व्हाट दादी माँ सेज, और I mean people like that. We don't go to a self-realized person who is authorized person. So today we are hearing about inculcating good habits,
This can be done, we can understand this only from a person who has himself hmm, developed those good habits. And he can tell from the experience, from some uh, from here. So we wanted to introduce a very little background of our scriptures. Scriptures, Vedic scriptures, it may be Vedic scriptures, it may be Bible, it may be Quran. So scriptures are not mythology. It is very bad. I mean, somebody gave our scriptures named as mythology, like a myth, like a story. So it's not a myth. And since then, I mean, all our children and everybody is thinking that these are just stories. There's not a valid background behind it. But I must tell you, we have a full session of maybe 1 or 2 hours, which we prove that these scriptures are not mythology, scientifically proven. We will give you so many solid examples, proofs, which will tell these scriptures are not actually mythology. So we say that whosoever is telling you about the good habits, those must be based on our scriptures. Hmm? Whosoever is telling us the Shabd Praman, hearing from a bona fide authority, that bona fide authority also must speak from the scriptures. We need a person to understand the scriptures. I mean, as we need a teacher to understand physics, as we need teacher to understand chemistry and all those subjects, we need a teacher to understand the Vedic scriptures. Hmm? So I'm not going to detail of how they are valid. I mean, just one example I can give you at this point of time. In our Srimad Bhagavatam, you will be surprised to hear that in great detail, it is mentioned how the embryo develops in the womb of a mother. कि पहले महीने में क्या डेवलपमेंट होती है, सेकंड महीने में क्या डेवलपमेंट होती है, तीसरे महीने में क्या डेवलपमेंट होती है. हम भी जनरली से दैट अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है, बट अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी आई डोंट नो 50 60 100 साल पहले आई, मे बी 100 साल भी नहीं. But these scriptures are much way back, I mean, from the history, at least 5,000 years back, as per the पुरातत्व विभाग वगैरह जो इसको एनालाइज करते हैं. ऑल्दो वी से दैट दे आर इटर्नल, हमेशा से थे, लेकिन उसमें बहुत ही ग्रेट डिटेल में बताया गया कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होती है, एक एक अंग कब निकलता है. उसको जब मैच किया गया अल्ट्रासाउंड की उसके मूवमेंट से बच्चे की, तो एग्जैक्टली मैच कर पाया. सो व्हाट आई वांटेड टू से, what are good habits, what are bad habits, first understand. कहाँ से पता चलेगा कौन सी good habits है. I mean, for some people a gay relationship may be a good relationship. What is the problem? For some people it may be bad. So I mean, we have different opinions every time. So who will tell what is the right thing to do? So that's the thing. We have to hear it from a bona fide authority, and our scriptures are those bona fide authority. And we need person to decode that for us. How we will believe that person? That person must be leading a set of good habits in his life. He must be satisfied, happy in following that, and he must be doing it with very judiciously. Okay. So that is what I wanted to say. And now, before we start, we must know the end. To plan, we must know the goal. And that is called knowledge. हमें कहाँ पहुंचना है, उसके लिए हमें पहले पता होना है, क्या प्लान करना है, उसके लिए पता होना चाहिए कि हमें पहुंचना कहाँ पे है. So we say begin with end in mind. हमेशा just not do it. So I would request, there is a slogan of Nike, I think, just do it. So we would say, please just not do it. Think before it. What is the goal to be achieved? What is the plan for it? Am I developing the good habits? And lot of such things. Okay. So sharpen the saw means gaining the knowledge. So here we would say, I mean, for any habit you can say. For example, if you want to develop habit of maybe swimming, you want to become a good swimmer. Sometimes क्या होता है कि जब हम स्विमिंग करते हैं, those who know the swimming, हम लोग floating नहीं करते हैं पैरों से. हाँ, क्योंकि हमने फ्री स्टाइल में कहीं किसी पॉन्ड में अपने आप सीखी होती है, और हम तैरने करते हैं तो किसी तरह हाथ पैर मारते हैं और लाइफ लॉन्ग हम ऐसे ही तैरने लगते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेन द नॉलेज. किसी स्विमर से को आपको बताएगा कि 1 महीने तक, प्रभु जी 1 महीने तक मिस्टर, आपको केवल फ्लोटिंग ही करनी है और कुछ करना ही नहीं है. हाँ, दैट इज कॉल्ड शार्पनिंग द सॉ. ओके. Now the next point is habit number 2. So habit number 1, in summary, we understood that before developing good habits for any area in this world, try to understand what is the right thing to do from a bona fide person. And then we will try to develop that habit. Okay.
Time management, we little a bit touched upon it in our last session. Today also we will discuss few aspects of time management. Generally, again, we want to live a free life जिसमें प्लानिंग ना करना पड़े. People generally hate planning. हम लोग कभी ऑफिस में प्रोजेक्ट प्लान बनते हैं, डेट्स डलती हैं तो उसको तो फॉलो कर लेते हैं क्योंकि मजबूरी होती है. पीएमओ होता है, एजाइल मेथोडोलॉजी और वाटरफॉल मेथोडोलॉजी और इतने सारे पीएमओस फॉलो अप वगैरह वगैरह, तो हमें मजबूरी में करना ही पड़ जाता है. नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में वी डोंट वांट टू प्लान, and that is our habit. But this is not a good habit. Once you have understood what is the right thing to do, you must plan it. For example, last में कुछ सेशन हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट का, आज भी कुछ सेशन हो रहा है. नाउ यू मस्ट प्लान, यू मस्ट हैव अ प्लान कि इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे 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 उतारूंगा. पहले साल में मैं ये करूंगा या पहले महीने में ये करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा. तो गोल at the end, I want this. I want to leave drinking alcohol, for example. You may not want, I'm not saying you leave it, but somebody may want to leave it. हाँ, तो हमने सुना कि ये it's not a good habit, तो अब उसका कुछ प्लान होना चाहिए, गोल होना चाहिए. After 1 year or 6 months, I will totally leave it. Before that, so what I will do, I will set my priorities. What is more important, what is not more important. I have my priority. My family is number one. Because of this drinking, I am not spending enough time with them. So first, I will spend my time with my family. I will do my all the office work complete. All the pending activities of household or office I will complete. And then if I get time, I will start drinking 1 pack out of the 4 packs. Suppose I was drinking. Just an example. So that's the goal. Priority setting. सो वी मस्ट सेट द प्रायोरिटीज. कैसे प्रायोरिटी सेट करेंगे उसके लिए भी हमें नॉलेज की आवश्यकता है, जो हमारा पहला स्टेप था कि व्हाट इज द प्रायोरिटी. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बॉस के लिए बहुत, कई बार मुझे लोग कहते हैं प्रभु जी मैं बॉस के लिए बहुत काम करता हूं लेकिन फिर भी मेरा बॉस मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, क्या करा जाए. प्रॉब्लम क्या जानते हैं, आप बॉस के लिए काम ही नहीं करते हैं, आप तो अपने लिए काम करते हैं. यू टेंड टू थिंक नहीं नहीं ये जरूरी काम है, बॉस का तो क्या है, वो तो पता नहीं किस किस काम को करने को बोल देंगे. एज पर मी, when organization has set up a boss in आपके ऊपर, तो you must follow it. Organization knows what is right and what is wrong. अगर हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते रहेंगे तो हमारा पर्सनल रिलेशन भी सही रहेगा, हमारी लाइफ भी सही रहेगी और आई बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी चलेगी. अगर आपके बॉस से कुछ गलत डिसीजन हो रहे हैं, मान लेते हैं, तो करेक्ट पर्सन विल करेक्ट हिम. So that is the priority. We don't actually do the things as prescribed. We want to do our way. So we don't plan. We don't want to follow the plan. So my request is first of all gain knowledge कि मेरी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज हैं, ऑफिस के अंदर क्या प्रायोरिटीज हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट गो इनटू डीपर कि what you expect from your life. What you expect. As I began, we began in the session with an wonder. The most amazing things with Yudhishthir Maharaj was asked, and he said that everybody is dying and we don't want to think about it, because thinking about death looks like we are becoming pessimistic, whereas it is not optimistic, it is not about pessimistic, it is about realistic. So we must think about it also, that what is the objective you want to get from the life, or we want to just get up and grow old and one day die, and maybe you accumulate lots of crores or rupees and just leave that money and nobody helping you. Yesterday somebody from our known person, he was killed from by corona, our nearby society, and he had lots of money, but nothing could save him. So we must think about it. So priorities, what is the priority from life, and then we can actually plan. So plan बनाने के लिए priorities का पता होना चाहिए, जरूरी है. पहले कौन सा खत्म होना है. PERT CPM, I don't know you know PERT CPM. PERT CPM में भी यही होता है, पहले ये होना है, इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, अगर इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा. And then buffer. We don't make any buffer. The number one mistake people do in making the plan, we think that it will happen this way and we will achieve the goal. मैं 18 साल तक पढ़ाई करूंगा, मतलब 12th करूंगा मे बी, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कर लूंगा, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं इतने पैसे कमा लूंगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ स्पिरिचुअल चीजों के बारे में जानूंगा. We think it will happen like this, but it does not happen like this. We know that people at the age of 1 year, 2 year, 5 year, they all die suddenly. Lot of people, the most healthy person suddenly dies. So we don't make buffer. What if अगर ऐसा हो जाए तो हमें plan B क्या है. Plan A is this, what is the plan B, and buffer क्या है, उसमें कितना टाइम, हमने सोचा था इतना टाइम लगेगा लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा लग गया तो. So in making your plan,
you have the buffers, and you must have the due dates. And due date is the most critical thing. We don't want to look at it. ड्यू डेट देखते ही क्योंकि टेंशन क्रिएट होती है, एंड वी डोंट वांट टू बी इन द टेंशन. But this is reality. We must face it. A particular task must end on a particular date. So these are the some of the things, goal, priority. We don't want to go into detail because this is not a planning session. I just wanted to say time management is very key factor in making your good habits in whatever you do. And you want self-realization, self-actualization, you must plan for it. We told in the last session, we have daily Bhagavad Gita sessions, half an hour session, and it's not a big deal. If you are waiting that after 50 years you will plan for it, I would say that's not a good plan, because you must plan early and you must be punctual. In the last session also, we started the class at 15 minutes late. Today also we started class at 15 minutes late. We were given extra time of 10 minutes last week. So, but I don't think this is good. For Indians, I believe that's a habit. I was also in corporates. हम लोगों की अगर 2 बजे मीटिंग होती है तो 2 बजे हम हिलना शुरू करते हैं, अच्छा मीटिंग है, अब हम उसके बाद डायल इन करना शुरू करते हैं. कई बार डायल इन करने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 5 मिनट फॉर इज नथिंग फॉर अस. Whereas I've seen Europeans, वो 5 मिनट पहले डायल इन करके बैठ जाएंगे. So I would request you, I'm not criticizing anybody, I myself gets late many times, but be punctual on your plans. Whatever plan you make, that actually is for execution, and you set the example. आप जैसा example set करेंगे, आपके juniors, आपके followers वैसा ही example set करेंगे. It is not about कि चलता है, ठीक है, ऑफिस में लेट सिटिंग अलाउड है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं. I don't believe in flexible hours actually. Flexible hours are for emergency situation, for sometimes when you need the flexibility. Otherwise, I think we should be punctual in everything we plan. Okay. So there is another aspect of punctuality and flexibility. Backup plan we discussed. We should always think about कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे. We should assume that something wrong will go. So these were few aspects of time management. Okay. Now, our biggest problem is we don't want to plan. And who is intelligent in this world? Who is considered intelligent? जो जितनी दूर की प्लानिंग कर लेता है उसको उतना इंटेलिजेंट माना जाता है, right? Okay, I'll give you one story. So there was a king. उस king में he was on the deathbed and there was no successor. उसका कोई बेटा नहीं था. एक नया किंग बनाना था and he was a crazy kind of person. He was dying and he was asked कि कौन किंग बनेगा and he said जो भी तुम्हें आप उस नदी में, उस समुद्र के पास जाइए, उस नदी में जाइए, जो भी वहां पे किनारे पे आपको सबसे पहले व्यक्ति मिलेगा आप उसको किंग बना देना. वेरी स्ट्रेंज रिक्वायरमेंट. he said ऐसा ही होना चाहिए, कल तक ऐसा हो जाना चाहिए. हाँ, तो लोगों ने कहा ठीक है. तो लोग वहां गए और अगले दिन मॉर्निंग में गए तो एक आदमी वहां पे मिला, बट एक शर्त है. वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि ये व्यक्ति 1 ही साल तक राजा बनेगा और 1 साल बाद आपको सेम चीज रिपीट करनी पड़ेगी. ओके. So they went and they found a person in the early morning, next morning, and they brought him and they told him that this is the condition that you will be a king now from today onwards. He said, wow, but you will be king only for 1 year. He said, okay, no problem. 1 साल के लिए तो बनूंगा ना, but there is another condition. After 1 year, आपको डाल दिया जाएगा, क्या कहते थे उसको, काला पानी की सजा. एक ऐसे आइलैंड पे आपको डाल दिया जाएगा जहां पे कुछ नहीं है. तो उसने सोचा, उसने कहा यार 1 साल की लाइफ में किंग की तरह बिता लूंगा, किसने देखा है बाद में क्या होगा. किसने देखा है आगे का, चलो बन जाते हैं. और वो बन गया और उसने 1 साल इतना एंजॉयमेंट किया. वो मीनवाइल वो राजा मर गए. इसने बहुत एंजॉयमेंट किया लाइफ में, जो जो उसने नहीं किया था उसने वो सब कुछ कर डाला. बट एवरीथिंग हैज टाइम. तो टाइम आने पर अचानक से एक दिन सैनिक वहां पर आए और उसको उठा के ले जाने लगे. ही सेड, सैनिकों मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम मुझे छोड़ दो. और सैनिकों ने तो माना नहीं. दे वर वेरी लॉयल टू द अर्लियर किंग एंड दे डिसाइडेड यूनिफॉर्मली, और उसको उठा के इस आयरलैंड में पटक दिया. एंड देन सेम थिंग रिपीटेड. दोबारा ऐसा हुआ, तिबारा ऐसा और बार बार ऐसा हुआ, अनलेस उन्हें एक वेरी इंटेलिजेंट आदमी मिला. उस इंटेलिजेंट आदमी ने क्या किया? उस इंटेलिजेंट आदमी को राजा बनाया गया. उसने डे 1 से, जानते हैं क्या शुरू किया? उसने डे 1 से उस आयरलैंड को डेवलप करना शुरू कर दिया. ही नेवर एंजॉयड एक्चुअली. उसने पूरे 1 साल उस आयरलैंड की तैयारी करी जहां पे उसको जाना ही था एक दिन.
पूरे 1 साल में उसने वहां बिल्डिंग्स बना दी, घर बना दिए, यहाँ से कई लोगों को माइग्रेट करा दिया, वहां पे कॉलोनी बन गई एंड दे वर वेटिंग फॉर द किंग टू कम। और 1 साल बाद उसको जब वहां पे डाल दिया गया, सो दे वेलकम्ड हिम एंड दे एनथ्रोन्ड हिम द न्यू आयरलैंड, ही बिकेम द किंग ऑफ द आयरलैंड एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ डेवलपमेंट। सो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, प्लानिंग अहेड। हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम LIC लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, 10 साल आगे का सोचते हैं, हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम डिजाइनिंग करते हैं, आज आप सब लोग जॉब्स में हैं, आप सबकी प्लानिंग होगी अबाउट योर फैमिली, कैसे फैमिली को एक्सटेंड करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करने हैं, इनकम टैक्स कैसे बचाना है, लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ, जितना हम आगे की सोच पाते हैं उतना ही हम इंटेलिजेंट बनते हैं, बट कितना आगे की सोच पाते हैं? डू वी थिंक लाइफ आफ्टर डेथ? If not, then we are not intelligent enough. We are intelligent, but we have to become more intelligent. So that is what I wanted to tell you about time management. Please plan for that eventuality as well, which is bound to happen. We will die one day, no matter what. So please plan for it as well, and we can help you in planning for that. Okay, working together, the last part, because we cannot take a lot of time today. So the last part is working together. There are two important words: working and together. Working means what? Execution. So we planned, we did the time management, we were punctual, but are we executing? I have seen lot of people, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, जहां बहुत सारा टाइम प्लानिंग में चला जाता है। प्लानिंग बनती है हायर मैनेजमेंट के लिए, एक बार प्लान मैनेजमेंट के पास चला गया, नो बडी बॉदर्स टू लुक एट द प्लान। जब कभी डेडलाइन मिस हो रही होती है तो मैनेजमेंट से डंडा आता है, तो हम किसी भी तरीके से अंडर द कारपेट कुछ कर उड़ा के कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। ओके, सो आई मीन वी विल नाउ डिस्कस व्हाट इज एग्जीक्यूशन। सो वी मे प्लान फॉर आवर लाइफ, एज आई सेड। हाँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमें तो एक दिन मरना ही है, वेरी गुड। हाँ, हमने ये सब प्लानिंग कर ली, बट एवरीथिंग विल फेल आफ्टर द सेशन। You will end up in doing your office works. आप सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे और you will forget about the session. So execution is the top most important thing. And another important thing is doing it together. Huh? In any corporate and any pursuit, you need people. You need people to support. That's called power of association. Hmm? And unless you work together, you're not going to succeed. So we'll discuss about this now. Okay, we'll discuss about the execution part. Okay, stick to the plan. No surprise. Hmm? We planned for our day. We prioritize that early morning. I will have discussion with my children. 15 minutes, only 15 minutes. मैं अपने बच्चे के साथ बात कर पाऊंगा, करूंगा, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा हूँ और बढ़ता जा रहा है। मैं ऑफिस सवेरे चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तब बच्चा सो जाता है। संडे वाले पापा बन गए, थैंक्स टू कोरोना, कि कुछ हमारी शक्ल दिख रही है घर में। बट जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, तब से काम तो और ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, आई एम नॉट एबल टू स्पेंड टाइम। आपने डिसाइड किया, प्रायोरिटाइज किया, नहीं, फैमिली लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्क लाइफ, मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन when it comes to execution, you are still not talking to your son or your daughter. Just an example. So whatever plan you make, you have to stick to the plan. You have to force yourself. Remember, it is about inculcating good habits. You have to force it. After having the knowledge from the prescribed person, after having the plan, then you have to force yourself to execute. See, you have to take charge. You have to, God helps those who help themselves. You have to take the charge. You have to force yourself by intelligence. You have to suppress sometimes your mind. Okay, so you have to stick to the plan. You have to seek guidance. We started with seeking guidance, seeking knowledge. We gained a lot of knowledge, but the person who gave us the knowledge, he would be the person who would guide us on the execution path, whether we are going on the right way. It may be our boss. It may be our mentor in our personal life. It may be your spiritual guide. Anyone who is actually helping you create your plan will be the person to seek guidance from, and we don't do it. We don't want to do it. जनरली मैंने अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में देखा है, लोग कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हैं। देयर इज आई मीन आई डोंट नो व्हाई पीपल वांट टू लिव इन द साइलोस। अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। मैं किसी से बात ना करनी पड़े, मुझे डिजाइनिंग करने का दे तो मैं बैठे बैठे डिजाइन कर दूंगा, बट उसके साथ फॉलो अप करना, उससे बात करना, पीपल डोंट वांट टू कम्युनिकेट, डोंट वांट टू इंटरेक्ट जनरली. So I think this is the most important person in your life, who is helping you, giving the knowledge, helping you create the plan. You must seek guidance in every after a while. कि अपडेट देना कि सर ऐसा चल रहा है, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, इसमें ये डिफिकल्टी आ रही है, एम आई ऑन द राइट पाथ? तो क्या, नहीं नहीं, ये आप कर ही क्यों रहे हो, इसको करने की जरूरत नहीं है, लीव इट.
समटाइम्स हम किसी प्लान में कोई एक्शन होता है, उसको करने के लिए इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि उसमें सारा टाइम चला गया, हम लगता है बॉस को बोलेंगे तो क्या कहेगा, और बॉस में से ओके लीव दिस स्टेप ऑल टुगेदर, ड्रॉप इट, लेट्स डू समथिंग एल्स. Therefore, it is very important to seek guidance. Okay. Provide regular updates and review. That's what I said. And again, this meeting we want to avoid. Why? Because generally इसमें गलती आप ही की नहीं है, गलती हमारे सुपीरियर्स की भी है. कई बार हम लोग ऐसी मीटिंग्स में केवल गलतियां निकालना जानते हैं. आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया. इसलिए sometimes people don't want to go into such kind of meetings. So becoming a boss, becoming a leader, I mean, it is great responsibility. You have to develop your subordinates. So you must tell them what is the right things they did, what are the things where they can improve. So this is the way it should happen. You should give your example. You should lead by example. Okay. So anyway, if the boss is good, he's doing that, I think it is our duty always to provide regular updates of how you are going. As I told you, you may be thinking that you are right, but you may be altogether wrong as per your superior. So this is the execution part. And accept feedback positively. Okay, here also it is about it is a dual responsibility. The feedback giver should give feedback in the sandwich way. I mean, he must tell what these are things you did wonderfully. These are the things where you can improve. Again, these are the things you did wonderfully. So good thing in between areas of improvement, and then again good things. If you end like this, I think the other person will always be able to hear you, take you. So criticize. To do criticism is very easy, but before doing criticism, you must see, is that fault finding good for the other person? Am I doing in a right way? Am I doing in the right place? I mean, am I doing it publicly or privately? We must praise publicly, but we must criticize privately. So is it the correct place? Is it the correct way? My mode, my tone is okay. My intentions are okay. I might want the other person to benefit or just want to criticize. And the person who is taking the feedback should always think that, see, I will tell you one thing. If you speak, you tell what you know. But if you hear, you may come to know something which you never knew. So सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप सुनते हैं तो कई नई चीज आपको पता चल सकती है. इसलिए somebody is giving feedback, maybe it is wrong, maybe you are not doing it wrongly, but even if you hear it, you may think, okay, I am doing it correctly, but the other person is thinking it I am not doing correctly. Maybe it's a perception, maybe I am doing in a way that is creating a negative perception. Maybe I change the way I do, although I'm doing the right thing. So a lot of things in this area we can talk about, but I think we should accept the feedback positively. It always for our benefit. Even if it is wrong, it will make us grow. Okay. Okay. Working together. Now the last part, teamwork. Again, you gained the knowledge, you created the plan, you started execution. During the execution, you sought the guidance every time, but you don't gel up good with the people. You have an allergy with people. You don't want to live with them. Okay, but it is very important. The teamwork is very, very, very important. कितने इसके ऊपर तो हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितनी चीजें करी जाती हैं. I mean, in our spiritual parlance, we call it association of devotees. So association of like-minded people. It's a synergy impact. You know that synergy impact. एक और 11. It's a great thing to do. You always need people. We are humans. We are social animals. We need people in our private life, in our official life, in everything we do. So we need to learn how to live with the people. And to live with the people, we have to listen. We have to listen. We cannot just speak. After speaking for maybe 45 minutes, I will take a pause and listen to you, what you have to say. Because the session is designed in a way I have only 1 hour. So otherwise it would have been an interactive session as well. But I would speak for some time, then I will listen to you. So more you listen to others, the more rapport you will build with others. Always try to listen what are the concerns, pain areas, interest areas of the other people. This way you will be able to become a very good leader as well. So listening power is, I mean, the number one power. We have 2 ears, we have only one mouth.
I mean, for each of these topics, we can actually talk for 1 hour. But we are giving you summary today. How do you inculcate good habits? So listening is a very good habit if you can develop this. Okay, give value to others' opinion. It is not important कि हाँ सुन लिया आपकी बात भी सुन लिया. Okay, okay, सबने बोल लिया. Now we are going to do this. This is not good. You are killing the innovative ideas, and I think the kind of work you people are doing thrive. You people are doing a lot of designing work which actually needs a lot of ideas. If you kill the opinion of others, you are killing the ideas. We know that no opinion is a bad opinion. हाँ, हमें एनकरेज करना चाहिए लोगों को बोलने के लिए. हमें हंसना नहीं चाहिए हम क्या बात बोल दिया आपने, यूजलेस आइडिया. वी आर किलिंग. फ्यूचर में वो आदमी कभी कोई आइडिया नहीं देगा. You will be at loss. So always give value. Okay, you have given wonderful opinion, let's write it down and let's wait. हम चलो लास्ट में देखेंगे इसके ये बेनिफिट है, इसके ये नुकसान है. Okay, now we can see that this opinion is coming out to be a winner. Are you okay with it? We should ask, are you okay with it? Do you have any suggestions? So we always give value to the opinion. Then only it will be a teamwork. Otherwise, not a teamwork. टीमवर्क के गाइज में आप लोग हिटलर मेंटेलिटी चला रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम टीम वर्क कर रहे हैं. इट इज नॉट गुड. सो आई मीन ऑल्सो ट्राई टू चेंज दिस हैबिट इफ यू कैन. ओके, टॉलरेट. You have to tolerate everything in life. Krishna says in Bhagavad Gita, Matra Sparshyetu Kaunteya Sito Sana Sukh Dukkha. What it means, you have to tolerate. It says, oh Arjuna, do you get frustrated when there is summer season? No, we still cook. हम किचन में जाते ही हैं. किचन में जनरली आई थिंक 99% किचन में एसी नहीं लगे होते हैं. हम कुकिंग करते हैं जून जुलाई में. हाँ, जब हमारा टेम्परेचर 1 और 2 डिग्री हो जाएगा तब भी हम ऑफिस जाते हैं, सारे काम करते हैं. So he said to Arjuna, like you tolerate summer and winter, the same way you must tolerate the pain and the pleasure. जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें टॉलरेट करनी पड़ती है. उनकी ओपिनियंस, उनके कपड़े, sometimes bad smell coming out of them. Yes, lot of things we have to tolerate. So that is, I mean, the number one thing in your personal life as well. You may not be liking some of the interest areas of your spouse, but if you don't tolerate, your relationship is not going to last. But if you learn to tolerate, there will be a lot of good things which you actually admire in your spouse, in your team. Try to look at those good things and try to tolerate the other things which are, I mean, not as per you. I will not say bad, but not as per your way of thinking. So if you can develop this, Krishna starts Bhagavad Gita with this teaching, you know that. In the second, that's why we should be here reading Bhagavad Gita. I think you should be listening those lectures because every problem of life is solved in Bhagavad Gita. Krishna starts giving knowledge to Arjuna with this thing. You must tolerate. Okay, spend some time together, build good relationship. After all, you should celebrate small success as well. So we will also celebrate. We have done 2 sessions. You have given 2 hours for development of your life. You have spent a lot of hours in developing the designing skills, your technical skills, but hardly any hours to develop your personal front, to self-development. And I would congratulate you that you have spent 2 hours, last week 1 hour, today 1 hour in your self-development. So we should celebrate it. It's a time to celebrate. We have successfully almost concluded this. So when we celebrate together, we spend some good moments, some lighter moments. We look to the personal front of everybody. जो बॉस मुझे हमेशा खड़ूस से दिखते थे, जब हम एक साथ कहीं घूमने जाते हैं तो वही बॉस हमें खेलते हुए दिखते हैं. And it actually makes the bond. So we should live together. Sometimes we should spend some time together. We should celebrate our success. But why we fail to work together? Again, because we don't tolerate and all those things. But here we have mentioned that what's in it for me? मेरे को क्या फायदा होगा? इतने सारे रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं हर मंथ में, मेरा नाम तो नहीं आ रहा है. एंड आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन के नाम पे क्या होता है. आई टेल यू बिकॉज आई हैव बीन इनटू सीनियर पोजीशंस. हम लोग ये कोशिश करते थे कि भैया ये नाराज हो जाएगा, इस महीने में इसको दे दो, इस महीने इसको दे दो, इस महीने में इसको दे दो. अवार्ड एंड रिवॉर्ड की सारी उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाती है.
because every individual thinks मुझे तो नहीं मिला, instead of thinking क्या मैंने really में ऐसा किया कि मुझे award मिले. So again, it's a lack of teamwork, selfish agenda, selfish motives. You will never be able to work in a team, and you will never be able to succeed if you don't work as a team. Okay. So when we think that we are part and parcel of a single person, we are part and parcel of an organization. Suppose Thrive is the organization, and we are part and parcel of Thrive. If Thrive success gets a success, it gets an order. I will be successful. You will be successful. But if we fight with each other, Thrive will be at loss. अगर Thrive को ऑर्डर नहीं मिलते हैं क्योंकि कस्टमर डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है हमारी फाइट की वजह से, हमें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, यू विल बी एट लॉस, आई विल बी एट लॉस. ये बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल है, हम हमेशा याद रख सकते हैं कि जब हमारे दांतों में कई बार हमारी जीभ कट जाती है तो क्या हम अपने दांतों को तोड़ देते हैं? नहीं, बिकॉज वी नो कि टीथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई सेल्फ. ये टंग भी मेरी है, ये दांत भी मेरे हैं. ये पियोन भी थ्राइव का है, ये क्लर्क भी थ्राइव का है, ये अकाउंटेंट भी थ्राइव का है जो हमारे बिल को हमेशा लेट करता है. मे बी. एंड ये सीईओ भी थ्राइव के है. So all we are all part and parcel. Similarly, if you start thinking that we are part and parcel of one God, it may be Allah, it may be Krishna, it may be Jesus Christ, but we are part and parcel of single God, may be known by different names. Then we will be able to think that we are a single family. And then we will be able to work together. That's a beautiful learning I'm giving you. You may be able to think that I am Thrive, but I would say go beyond this. Think that we are all part and parcel of God. He is the creator. We are his child. Krishna says in Bhagavad Gita, Aham Bija Pradapita. I am the seed giving father. If Krishna is the father, then we are all his child. Then why we are fighting for each other, for land, for India and Pakistan, Murdabad, India, Jindabad and all those things. Then only we will be able to work together. इसीलिए हमारे डिवोटीज जब संसार में कहीं काम करते हैं तो आप बड़े ही यूनाइटेड रह पाते हैं. ठीक है. जब हम सोचते हैं कि हम एक ही फादर के बच्चे हैं तब हम यूनाइटेड रह पाते हैं. जब हम सोचते हैं कि ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है, तो हम फाइट करते हैं. ठीक है. आई विल गिव यू इन द लास्ट स्लाइड्स एग्जांपल, ग्रेट एग्जांपल ऑफ श्रीला प्रभुपाद. यूनाइटेड नेशंस को आप जानते हैं. यूनाइटेड नेशंस सेकंड वॉर के पहले ही बन गया था, लेकिन वो सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया. यूनाइटेड नेशंस जब स्टार्ट हुआ था, यूनाइटेड जुड़े हुए मतलब यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद कई सारे नेशंस में डिविजन्स हो गए और हम उसको जोड़ नहीं पाए नेशंस को, हम लड़ाई को भी नहीं रोक पाए. हम लोगों को काले को, गोरे को, इंडियन को, चाइनीज को, रशिया को, अमेरिका को साथ में नहीं ला पाए. लेकिन श्रीला प्रभुपाद, दिस वन पर्सन, यू नो, इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन. आज आप इस्कॉन में देख सकते हैं गोरे, काले, अफ्रीकन, यूरोपियन, अमेरिकन, हर सारे के सारे लोग एक साथ बैठ के यात्राएं करते हैं. I mean, they do go on pilgrimage, they do kirtan, lot of things you can see in any temple of ISKCON. आप वृंदावन जाइए, मायापुर जाइए, आप देखेंगे सारे कास्ट, क्रीड, हर तरह के लोग एक साथ, they are united. Why? Because they believe that we are part and parcel of one God, and that's the best key for working together. I mean, organization do a lot of things for team building, but every team building will fail because inside we are selfish. We don't think a common factor. वो कॉमन फैक्टर हम नहीं देख पाते. हम लोग एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ऑफिस की पार्टी है, लेट्स एंजॉय. पार्टी में करते हैं और खा पी के चलते हैं. एक्चुअली हम टीम बिल्डिंग के लिए पार्टी करते हैं, लेकिन टीम बिल्डिंग हो नहीं पाती है. So I would say spirituality is not only for finding your ultimate goal. Even if you want success in your professional front, spirituality will help you. Working together, execution, it will not let you become lazy because we wake up early, we sleep early, we plan our day. We are very good in execution because this spirituality, the practice of spirituality has made us very active, very focused on our goals, and we have learned working together. Okay, thank you. I will end the session now, and if you have any questions, you can ask. I think you can unmute yourself directly and start asking questions.